वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड डिवाइस को हैक कैसे करना है msfvenom के जरिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप इससे किसी को हार्म मत करना, क्योंकि सबका अपने पर्सनल डेटा होता है। आप चुरा लोगे, बेकार कंप्यूटर स्ट्राइक आ जाएगी, आप भी जेल में चले जाओगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रूट एक्सेस चाहिए पड़ेगा। sudo से रूट एक्सेस लें। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। डिलीट कर देना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ेगी जो इसका वर्क करेगी। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे आप टाइप कर देना है। -p पेलोड के लिए /metadata /reverse lower hyphen tcp स्पेस। अब आपको आपका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। एल होस्ट करना है। एल होस्ट करना है तो मेरा बिना ओपन करना है। मेरा बिना ओपन करना है sudo git config। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है। Ctrl+Shift+C से Ctrl+Shift+V से इसको पेस्ट कर देना है, स्पेस देना है। अब आपको एल होस्ट के बाद आपको पोर्ट सेट करना है, एल पोर्ट करना है, इक्वल्स करना है, आपके साथ अपना पोर्ट सेट करना है, पोर्ट करना है। इसके बाद आपको जो लोकेशन सेट करना है, एप्लीकेशन तैयार करना है, उसका नाम .apk, बस आपको इसको एंटर कर देना है। मेन वर्क जो है इसमें एप्लीकेशन आपको इसको किसी और के डिवाइस में भेजनी पड़ेगी जहाँ पर लिखी है। एप्लीकेशन आ गई है। अब आपका msf कॉन्फ़िगर करना है, आप कमांड के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूज एक्सप्लॉइट विद मल्टी हैंडलर एंड्रॉइड पे यूज़ करने से मल्टी हैंडलर के बाद आपको एंटर दबा देना है। मल्टी हैंडलर के यूज़ में आ गए अपन। अब आपको सेट पेलोड करना है। जो एप्लीकेशन का मैंने तैयार किया था वो वाले पेलोड्स को सेट करना है। सेट पेलोड metadata slash आपने जो सेट किया था उसके हिसाब से आपको सेट करना है। एंटर कर देना। सेट पेलोड्स हो चुके हैं। शो ऑप्शंस करना है। ऑप्शंस के बाद आपको देखना है कि क्या चीज़ की कमी है। इसके अंदर एल होस्ट की कमी है, आपको एल होस्ट डाल देना है। सेट एल होस्ट करके ध्यान रहे कि इसमें इक्वल्स टू का साइन मत यूज़ करना, नहीं तो काम नहीं करेगा। शो ऑप्शंस हेल्पोर्ट भी सेट कर देना आप साथ ही से। शो ऑप्शंस करना है, चेक करना है कि वो सेट हुआ कि नहीं। ठीक है, सेट हो चुका है। आपने जो पेलोड किया था इसके ऊपर सब सेट हो चुका है। एल हेल्पोर्ट एवरीथिंग सेट। कुछ नहीं करना, अब आपको डायरेक्टली रन लिख के एंटर कर देना। अब आपको क्या करना है कि जो एपीके जो अपने तैयार की थी उसको अपने विक्टिम के मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कराना है।
is it too